So is it visible? Is it audible? Yes, sir. Okay. So आज डायरेक्ट टाटा काऊ आऊ माने बेसी वेट करिवार नै बाबू ठीक टाइम रे जी आसला आसला न एबे स्पीड ऑफ द लाइट रे पढ़ा हबो हला 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड रे चलिबो एबे क्लास so so be ready for it. So मु आज जोडा पढेबी तार पीडीएफ गोटे मु देई देबी हला जी जहा नोट कोड करि परिबो करो नले मु आथरे देई देबी पीडीएफ बट घोषिया पई चेष्टा करनी पीडीएफ रे खाली देई देले मु होबनी तम माने पाठटा एठी बुझो try to understand here okay so after that you can just write the formulas and whatever but at least try to understand why this is happening why that is happening okay so another thing I want to say तमनकर एक्चुअली को टाइम टा फ्री रहउची मु जानिया पे चाहू माने राती रे नाइट टाइम रे किबा इवनिंग टाइम रे को टाइम रे फ्री रहउचो सर राती रे विद्यासागर क्लास केतेल सरुची एंड एट व्हाट टाइम यू कैन बी फ्री so that I will solve I am actually trying to solve some problems okay so आमे जते सबुडा प्रॉब्लम तो करि पारु नै घंटी किया क्लास रे किबा तमर बहुत उडे चैप्टर्स अछि मु एठी कोन एठी पढौची बेसिक्स करूची बेसिक्स पढौची हला बुझिया पे चेष्टा करूची तो ई सब घंटी किया क्लास रे आमे एक्चुअली सेति की धरि पारु नै जिंसटा माने प्रॉब्लम जते सॉल्व करिया सेति की हमर कांसेप्ट्स क्लियर हे जिवो तथापि बहुत उडे प्रॉब्लम मु सॉल्व करूची एठी किंतु आहुरी बहुत उडे प्रॉब्लम मु चाहूची सॉल्व करिया पई तो सेति पे मु ओटे भाबिची YouTube लाइव क्लास नेबी बोली बट कोट समय रे नेले इट विल बी फिजिबल फॉर यू एंड यू कैन बी माने ऑनलाइन किंतु सेथरे वन ऑफ द डिमेरिट्स इज यू कैन नॉट टॉक विथ मी यू कैन जस्ट हैव अ चैट बट यू कैन नॉट टॉक विथ मी you only will listen my voice but I'll try to do enough justice there so I'll try to solve all the questions in YouTube live classes so if you all are ready so just say me the at which time I should do that को टाइम रे कले तमन फिजिबल हो समस्त बसी की देखि परिबो एटलीस्ट एंड दैट वीडियो कैन बी अपलोडेड लेटर ऑन माने से जो लाइव सेशन चलतिबो ता परे मध्य तम माने यू कैन वॉच दैट वीडियो if somebody has missed that live session you can even watch that video so नहले हमें गोटे एमती काम करिया प्रति वीकेंड रे सैटरडे संडे देखि गिरी हमें कर परिया so गोटे टाइम तम माने सेट करो माइंड रे को टाइम रे कले फिजिबल हबो हमें आउरी प्रॉब्लम केते गोटे सॉल्व करबी सेथे आउ माने पाठ आउ नै खाली डायरेक्ट प्रॉब्लम माने कर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढी देछि पूरा चैप्टर किंतु बहुत जन परे आसी छ बहुत जन आधा देखिन हला की तो सेई ऊपर जते प्रॉब्लम हमें करिवा ता भितरे फार्मूला बेसिक सब आसी जो को टाइम रे कले भलो हो सर राती केते बेले सर राती 7टा पर 7टा तमर क्लास रहउनी ता परे सर एग्जाम टा जो रहउछ एग्जाम रहउची सर 8टा पर 8टा बेले 8टा ठीक सर 8टा पर ठीक अछि 8टा परे जदी हबो माने तमर टोटल 7टा रु 8टा रहउची बोले एग्जाम विद्यासागर यस सर हाँ 8टा पर्यंत जदी एग्जाम रहउची ता परे टिके टहल मारिबो टिके एमती बसा बसी टिके खाना पीना डिनर फिनर हबो ना आ 8टा बेले कर देले केमती हबो सो हमें गोटे काम करिया 9टा रो करिया यस सर ना कोन एनी प्रॉब्लम नो सर अरे तू सेना कहलु नो सर अन्य मानकर कार कोन प्रॉब्लम थिबो ना सर किछ प्रॉब्लम नै नहले जदी तम माने कहइबो सकाळ 6टा रे करिया सकाळ 6टा रे करिया 7टा रे करिया जदी किछ असुविधा नै हला आ मु कहिबी मु माने सेटा भी मोर सेटा एक्चुअली मु तार सेटिंग्स से सब करियार बहुत अछि ताको एक्चुअली मु प्रथमे मु केबे नेइनी YouTube लाइव रे क्लास नेइनी so I'll try my best माने प्रथम क्लास एटलीस्ट ओटे जनरल क्लास ओटे एमति नेबी तापर देखिबा जदी सेटा ठीक लागिला चालुची भलो तम मानकर रेस्पॉन्स जदी भलो आसिला जे हां सर भलो
लागुची सब देखा जाउची सुबा जाउची सब ठीक ठाक होउची तामाने हम गोटे टाइम सेट करबा सेही टाइम रे वी कैन प्रोसीड ओके खाली सेथरे कोन हो मो डायरेक्ट आसीबी प्रॉब्लम स्क्रीन रे थिबो प्रॉब्लम सॉल्व करबी तापर नेक्स्ट प्रॉब्लम जीबी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करबी आ सॉल्व भी माने पूरा जे वैल्यू पूरा बाहर करी कि तुमको देखैबी सेमती नहीं कटाकटी करी कि मु फाइनल वैल्यू टा मोर जो मोर कॉपी रे कि जहां रे करिथिबी मु से फाइनल वैल्यू टा लिखि दिथिबी सेठी बट यू हैव टू सॉल्व इट ओके माने मु तार बेसिक टा पूरा देखै देबी केमती प्रॉब्लम टा अप्रोच करबा स्टार्टिंग करबा बट एंड रे जेतले वैल्यू वैल्यू ए सब पुट करबा जिंस सेटा सब स्क्रीन ऊपर थिबो you can just solve it later on okay so let us start today's class work and kinetic energy I was talking about work and kinetic energy in the previous class टिके देखि दियो आथर को एते स्क्रीन रे देखि नथिली तो वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी हमें जो पढ़थिले लास्ट क्लास रे okay so eta kon hoitila hame dekhthile gote whenever we are just giving some energy to a body so the body moves okay suppose gote particle iti achi and iti hame push karuche gote particle ku so we are transferring some energy to this particle so this body it is moving in the positive x direction so whenever we are pushing or we are giving some force to the moving particle so the particle accelerates larger okay mane in a greater speed so sethipai in that case we can say work is done on the particle and it is mane it is giving kinetic energy to the particle so the kinetic energy increases similarly suppose the body is moving in this direction and we are just trying to pull this body in the backward direction or we are just opposing this moving particle so in that case the age of moving particular energy is getting transferred to this opposing body so in that case the energy is transferred from kinetic energy is transferred from this particle to another body so kinetic energy decreases so in that case we can say the work is done by some external agent okay work is done by some external agent to change the kinetic energy to vary the kinetic energy of the particle so what is the formula of the work that is f d cos theta suppose the particle is here and this is the displacement of the particle and within this distance we are applying some force okay so a force dela pare a particle a to etiki displace heichi so in that case we can write the work done okay so that is f d cos theta or f dot t we have solved the problem kon tara derive karthile last class re so what is the change in kinetic energy that is change in kinetic energy is k final minus k initial that is equal to work done okay so change in kinetic energy of the particle k final minus k initial is equal to w that means delta k is equal to w okay so this is called work and kinetic energy theorem in a generalized sense so whenever we are considering the gravitational force okay suppose there is a vertical movement of some body and it is coming towards the downward side okay let it be a projectile let it be a vertical motion or a parabolic path or whatever you consider so those kind of movements they are actually they are governed by the gravitational force so what is the work done by the gravitational force suppose we are projecting a body towards the upper direction so it will definitely try to come to the downward direction so who is actually which force is doing work this gravitational force is doing work to bring the body to the center of the gravity okay so what is the work done by the gravitational force that is mgd cos phi okay so what is d that means the displacement a to a point to manakar gala so that is the displacement okay so mgd cos phi you can say that phi is the angle between your projection and the x axis that you can say okay
So or jodi ame gote vertically upwards neche to cos phi is nothing but 180 degree or 0 degree class re kahithili. So work done by an applied force as a particle like object is either lifting or lowering is related to the gravitational force by the work the gravitational force and the change in kinetic energy of the system. Okay, so suppose we are throwing a body from this point to this point. So this is our applied force. ame gote force deche, that is external agent, that is applied force. Again the gravitational force is also doing some work to bring the particle towards the ground state. ता माने कोन? So in the upward direction रे जेतले हमें गोटे नौची मु गोटे upward direction रे जेतले बॉडी को थ्रो करछि तो सेतले कोन होछि? गोटे upward direction रे जेतले हमें बॉडी को थ्रो करछे सेते बेले कोन होछि? गोटे स्पीड ता आस्ते आस्ते कोन होइछि डिक्रीज हेई जाउछि and at this point the speed becomes 0. Again from this point again the body moves downward in the downward direction. Speed increases while coming to the downward side and speed it kon hochi there is a mane transfer of energy from kinetic energy to potential energy. mu padila le koibi potential energy ebe asini hala. So that you can write, that you can say there is a change in kinetic energy of the system, that is K final minus K initial. That is equal to what? That is equal to the applied work done. That means we are throwing, mane our applied force is doing some work, that is work done by the applied force and work done by the force of gravity. Okay, gravitational force. So taku ame kemti lekhi pariba? Jodi K final is equal to K initial at gote point re ame let us consider at an instantaneous point. So K final is equal to K initial. So work by the applied force is equal to minus G. Okay, e formula ta mon rakho ebong e formula ta mon rakho hala. Similarly ame dekhiba kono je spring force last class e dekhthile work done by a spring force. What is the work done by a spring force? Suppose suppose a mass is connected to a spring. Okay, massless as compared to this mass, the spring mass is negligible and it is connected to a spring. We are suppose pushing the body, we are pushing the body towards this direction. That means automatically this body will try to come to the original position. Spring ta elongate hela, spring will compress. सेमती स्प्रिंग को हमें कंप्रेस करिवा माने करे ए पुट डायरेक्शन को कंप्रेस करिवा, देन अगेन द स्प्रिंग विल मूव बैक द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. तो सेति पई कोन होची वर्क डन बाय द स्प्रिंग, माने स्प्रिंग रो जो फोर्स that is doing some work to bring this body towards the original position. So if an object is attached to the spring end, the work done on the object, work done on the object kaha upare hochi? Object upare hochi. Kiye korchi? By the spring force. Okay, when the object is moved from an initial point xi to final point xi. Okay, initial point to final point, if it is changing its position, the object. So work done by the spring force, mane last class में कहती Hooke's law is Fs equal to minus k into d. That d is the displacement and k is the spring constant or okay, so force constant ke spring constant taku कहूचे. Why the minus sign is involved? Because the displacement is opposite to the mane force of the spring. Okay, तो सेठी पे minus symbol अच्छी. So minus F into D. What is the formula for work done? Minus F into D. Minus F into D. हैला. तो minus F into D जदि आमे एठी जोटा जेमति देखिले हैला, आमे जदि सेमति एई इक्वेशन रे पकेबा, सो हमको फाइनली हमको आंसर मिलिबो एटा. Work done by the spring is equal to half k xi square, not xf square. Okay, xi square minus half k xf square. एटा जदि डेरिवेशन एसो हमें करबा एटा ऑलरेडी पाइबा हमें, सेते कंफ्यूज होबार नै. सो इफ x इनिशियल टाको हमें नबा 0, let it be at origin or 0 point. Okay, so what is the change in length? Delta x ta hejibo kono x final minus 0, so that is equal to nothing but xf. Okay, so then the equation becomes or eta ko jodi hame total khali emti gote x boli gote quantity naba, so ei jo equation ta kon hejibo w spring mane work done by the spring force is equal to minus half k x square. Okay, so eta hejibo tamar equation. I'll give this PDF. Okay, don't worry. So by this equation, actually, what we can measure
okay, what we got or the what inference or what conclusion we can draw. So eta jodi gote generalized sense re naba ହେଲା ଗୋଟେ generalized ଗୋଟେ variable force ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ନବା ଓକେ ଏଟା ତ ହେଇଗଲା spring force ଏଟାକୁ ମୁଁ କହିଲି gravitational work done କିମ୍ବା ଏଟାକୁ କହିଲି spring work done କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ generalized sense ରେ ଯଦି any ମାନେ physical system କୁ ଆମେ ଯଦି consider କରିବା so what is the work done is nothing but the work done is nothing but माने जो force applied force रहुची okay the external force रहुची सी जदी गोटे बॉडी को इनिशियल पॉइंट रु फाइनल पॉइंट को डिस्प्लेस करूची तो आमे गोटे प्रथमे कोन करबा इट लेट अस कंसीडर दिस ग्राफ ओके गोटे इनिशियल पॉइंट एठी एंड एठी गोटे फाइनल पॉइंट एंड लेट दिस बी dx okay dx is the hey देखो delta x किबा dx is the change in length of the or the change in position of the body in the x axis same the y axis z axis मध्ये हमें 3 dimension we can consider okay so first we take कोन f dot dx okay हमें dx नबा प्रथमे तापर ताकू इंटीग्रेट करिबा ए जो छोटो डिस्टेंस टाको हमें इंटीग्रेट करिबा इनिशियल पॉइंट लेट दिस बी द इनिशियल पॉइंट एंड दिस बी द फाइनल पॉइंट तो इंटीग्रेशन नेले x i ru x f dot dx okay dx जेतेबेले कांसेप्ट आछी सेटे सेतेबेले दैट इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस माने डेल्टा x टेंड्स टू 0 वेरी स्मॉल डिस्टेंस हमें कंसीडर करू तापर हमें ताको इंटीग्रेट करू इन ऑर्डर टू मेक आवर लाइफ इजी ओके सो हमें जदि फाइनली हमें देखिबा वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स तारो फार्मूला कोन फोर्स डॉट जेमति f डॉट ds मु कहउली इनिशियल स्टेज रे हम जेमति f डॉट d बोली कहउची तो f डॉट dx बोली हम कहि परिबा एवं ताको इंटीग्रेट करले हमको टोटल फोर्स मिलिबो सो ग्राफिकली हमें जदि देखिबा सो ग्राफिकली व्हाट वी ऑब्जर्व the area under the curve of the force versus displacement graph will give you the total work done ये जो एरिया टा हमें पाइले सपोज फोर्स तार एमती गोटे आर्बिट्रेरी शेप रे अछि किंतु से ग्राफ रो एरिया जति की माने सपोज दिस इज x इनिशियल पॉइंट एंड दिस x फाइनल पॉइंट ओके सो एंड द ग्राफ रे कोन अछि y एक्सिस टा अछि तमरो फोर्स एंड x एक्सिस टा अछि तमरो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी so the graph under the force versus distance graph will give you the area under the force versus distance graph will give you the total work done okay graphically सेमती graphical questions exam में आता है चार ग्राफ दिया होगा so which of these quantities define the total work done when the body is moving from initial to final so this type of graph you have to observe so जहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होगा और एरिया अंडर द कर्व होगा in that case only you can say so this will give us the total work जेमति हमें काइनेमेटिक्स रे whenever when we are studying the kinematics equation so which of these graphs represent the uniform velocity graph सेतल केमति करथले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ केमति हमें डिफाइन करथले सेमति we have to mane consider the graphs always okay so whenever you are going for engineering or higher studies or medical science so in that case you have to make some statistical analysis okay सेतबेले आ तुमको के इमति बसी की इक्वेशन इशू पढ़ाइबेनी so graphically you have to represent the things okay so ये यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका ग्राफ कैसे होगा ये अगर कांस्टेंट एनर्जी में है तो उसका ग्राफ कैसे होगा so graphs you have to consider okay you have to visualize things similarly what we have read in the last class the total work done in the x y and z coordinates you can write like this it is empty hame gote axis consider kale semti we can consider dw mane gote choto work done in displacing when the body is going from initial to final point okay or ri to rj okay so एतिकी डिस्टेंस गला बेले तार लेट द वर्क डन इज dw माने छोटो वर्क डन पला तो माने टोटल वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आमे जदी कंसीडर करबा सो वी हैव टू इंटीग्रेट द होल टोटल ऑफ dw ओके so dw in all the directions so x1 ru x fx dx plus xy fy dy plus fz dz three dimension we have to integrate the whole equations similarly
let us consider what is power. What is power? Average power. Mu kon define kartli, power is the rate of work done. Suppose this body is moving from this point to this point in a time delta t. T initial, t final. So what is the delta t? T final minus t initial jodi ame naba, so that will give you the delta t, mane change in time. Okay, so a time interval bhitere when the body is doing some work, so p average is equal to work done by delta t. So work done for unit time, or you can say the work done in a time interval is known as power. So what is instantaneous power? Similarly, when limit delta t tends to 0 dw. Okay, so eta ko ame kohu kon dw by dt, so that is called instantaneous power. It is a mathematical relations. Okay, जेमती बहुत short interval of time रे हमें प्रथमे consider करिवा, then we have to integrate over the whole length किबा whole time. Okay, so सेमती एटा जदि हमें लिखिबा dw by dt, एटा जो लिखिचे, so what is dw? एटा को dw टा को हमें केम लिख करिया, f dot dx, f dot dx ताको कौन लिखिबा, work done we know f dot dx. Okay, so similarly f dot dx by dt, but what is dx by dt? Mane displacement divided by time, that will give you what? Velocity. Velocity. Fe. Okay, so if there is an angle between the displacement and the force, जेमति मु कहली गोटे फोर्स हमें ए पट डायरेक्शन रे पकोचे, किंतु बॉडी टा स्लाइड हे एमती x एक्सिस डायरेक्शन रे जाउची. So displacement रो वेक्टर रो जो नोटेशन इन x axis and force रो डायरेक्शन, हमें जेते ट्रॉली जो हमें जो कहउतली के लास्ट क्लास रे, ट्रॉली गोटे ट्रॉली बैग हमें घुसरे नौचे रोड रे, बट एक्चुअली कोन ट्रॉली टा x डायरेक्शन रे जाउची, बट फोर्स टा हमें कोन टिके टिल्ट करी के दोचे गोटे एंगल. सो लेट द थीटा बी द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. सो सेठी सेमती डिस्प्लेसमेंट जदी ए डायरेक्शन रे एवं वेलोसिटी मध्ये से डायरेक्शन रे हो, सो f डॉट v हे जिवो तमरा power. Okay, another form of power माने इक्वेशन. ओके, सो सेमती वेलोसिटी देथिबो, फोर्स देथिबो एंड एवं तांको भितर एंगल देथिबो, वी कैन फाइंड आउट द पावर. ओके, वी कैन फाइंड आउट द वर्क डन आल्सो. dw by dt कर देले हमको मिल गेला, ए सॉरी p डॉट dt जदी हमें करबा, ए जदी हमको पावर देछि एवं टाइम देछि, वी कैन फाइंड आउट द वर्क डन p डॉट dt. एटा को हमें कले किंबा p into t, power into time total time interval is equal to work done. ये सब जिंस रिलेटेड कंटेंट. ओके, तो सेमती तुमको जहां डाटा देथिबो विभिन्न इक्वेशंस, हमें को इक्वेशन सेठी पकेबा, जस्ट ट्राई टू माने अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, हमें को इक्वेशन ता पकेले हमको इजी हो सॉल्व करिया पे, दैट वी हैव टू जस्ट माने हमर आईक्यू सेति की स्ट्रांग हेतिया दरकार. सेति में जेते प्रॉब्लम सॉल्व करिवा सेते हमको इजी हे जिवो. जे एमती टाइप रो प्रॉब्लम आसी, सो एठी हमें कोन डाटा पकेबा, एमती टाइप रो गोटे प्रॉब्लम आछी, एठी अन्य कोन पकेले हो. सो वी हैव टू कंसीडर. Similarly, now let us see, so what is potential energy? So before going to the potential energy, just try to see what is called a conservative force. So a force is a conservative force if the net work it does on a particle, जो force टा गोटे particle ऊपर गोटे work done करूची. Okay, so on a particle moving around any closed path, if the particle is moving around any closed path. Okay, so if this force is doing some work to move this particle from this position to this position, but in a closed path. Okay, so the force is माने work done is called zero work done. माने initial point यहाँ पे था और final point भी याके वही initial point के ऊपर बैठा. Okay, so मतलब initial point और final point के बीच में कोई ये नहीं है, difference नहीं है. So that means the path is a closed path and the work done is zero. Equivalently, we can write, so a force is conservative if the net work it does on a particle, if the net work, suppose there are different types of forces acting on the particle. Okay, so the different types of forces acting on the particle are doing some work on the particle. So if the net work it does on the particle, okay, moving between two points does not depend upon the path taken by the particle. The अर्थ कोन?
Suppose I'll just show one figure. So suppose let us see this figure. So let this be a point A and this be a point B, and this is the one of the path one, and this is another path one, path two. Okay. So similarly, again you see in the figure. So A ru B jauchi and A ru B jauchi, but the path is different. ये एमती एमती बुली बुली जाउची, ये तार बुलाटा अलगा. Okay. So this force is called conservative path if the net work done by the particle. Mane if net work done by the particle from moving this particle from point A to point B. Suppose path 1 re work done ta asila 50 joule. Okay, and path 2 re madhya work done ta jodi asila 50 joule. Okay, whatever may be the path of shape we need not consider. Okay, so but if we are getting the same magnitude, work done is 50 joule for path 1 and work done is 50 joule for path 2. So in that case we can write the force which is acting on the particle, that is a conservative force. Okay, so say either it should be a closed path. Jodi closed path heichi to tebe to akhi buji ki ame zero likhiya ku badhu. But even if it is not a closed path, but the work done is same from point A to point B, point A to point B, whatever may be the path, the work done is same. So that means it is independent of the path. माने 8 पॉइंट रु 8 पॉइंट जीवा पे जेति की वर्क डन लागुची 8 पॉइंट रु एम्प्टी जे बुली की जीवा पे सेति मध्ये वर्क डन लागुची. That means it is independent of the path, so it doesn't depend upon the path. So that means the force is the conservative force, we can write. So what are the types of conservative force? The gravitational force and the spring force are conservative forces. But the kinetic frictional force is a non-conservative force. Why kinetic frictional force is a non-conservative force? Frictional force माने कोन आमे गोटे एठी इक्वल आमे मन करो ए बॉडी टा को एपटू टाणुचे ए सरफेस ऊपर देयर इज ऑपोजिट मूवमेंट जोटा ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स टा पड़ुची at the tangent to the interface between two surfaces, that is called friction. So but after some time, if this force, this applied force is larger than the frictional force between two interfaces, that means a body will move in this direction. So a body ta kono puni authare tar kono original path ko asiya pai kichi tar sadhan achi ki nahi. So in that case this is called kinetic frictional force. Okay, so these are all non conservative forces. Similarly, I mean, equivalently, a force is conservative if the net work is done on the particle moving between 2 points, doesn't depend upon the path. Acha, say same in. So anyway, so is a non-conservative force. So a potential energy is a energy. What is potential energy then? We can just define it. I mean, kinetic energy. So what is potential energy? We can define here. So potential energy is the energy that is associated with the configuration of a system. Energy associated with the configuration of a system in which a conservative force acts. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ conservative force ଗୋଟେ body ଉପରେ ପଡୁଛି, so the energy associated with the configuration of a system. ମୁଁ କହିବି କ'ଣ what do you mean by the configuration of a system? I will say it. Okay, so when the conservative force does work on a particle within the system, okay, when a conservative force does work on a particle within the system, the change in potential energy, the change delta u, that is delta u. Okay, so change delta u in the potential energy of the system is delta u is equal to minus w. आमे सेठी कोन नउतले delta k is equal to what? Work done. आमे simply आइडिया को नउतले, but here the change in potential energy, delta kinetic energy, delta k माने kinetic energy, that means k final minus k initial, but delta u माने कोन? Delta u माने potential energy. U is potential energy. मोर एटा symbol, my sign conventions. Okay, को बुक रे p नहीं थांदे, को बुक रे delta v नहीं थांदे. So don't get confused by those notations. Whatever notations you are taking, take it uniformly. Okay. So delta u is equal to minus w, or you can write what?
माने u final minus u initial is equal to minus work done. Negative work done जोटा को define करा जाए the change in potential energy of the system. Okay, simply if the particle moves from initial point to final point f, the change in potential energy of the system I mean कौन लिख परिबा आमे जेति कि work done माने कोन आमे जानि छे already we just defined the work done like this first equation, that means the integration of dw. Okay, similarly एठी हमें वर्क डन टाको हमें कोन लिख परिबा डेल्टा u देखो ए जो सेकंड इक्वेशन ता डेल्टा u is equal to minus w ता माने कोन minus x1 ru x final fx dx. Okay, so जेतु की वर्क डन रो फार्मूला होची f dot dx. Okay, किबा फोर्स इनटू डिस्टेंस जदी हमें देखिबा इनिशियल रू फाइनल हमें इंटीग्रेट करिया बाध्य. Okay, so एटा कोन हे जिवो जेहेतु कि डेल्टा u is equal to minus w, it is your delta u is equal to minus xi ru xf dx. So एटा होची तमरो इक्वेशन. Similarly एटी कोन लिखली थर्ड पॉइंट रे बोल्ड रे मु लिखिछि देखो बोल्ड में लिखा है देखो the potential energy associated with the system consisting of earth and nearby particles. Okay, whenever we are considering earth to be the inertial frame of reference, okay, or our frame of reference ता माने earth को जदी हमें frame of reference नबा, so any nearby particle it will satisfy the gravitational जेमति हमें एठी kinetic energy पढिला बेले कहली work done by the gravitational force. Okay, माने कोन kinetic energy को gravitational potential kinetic energy sorry kinetic energy को work done by the gravitational force सहित हमें relate करे. Similarly if we try to relate the work done with the gravitational potential energy or the potential energy configuration of the system. Okay, so similarly how we can just define it. So if the particle moves from height yi to yf, so let the particle is at yi, eta kon vertical direction y axis, so yf, let the particle is projected from yf to yi to yf. Okay, height. So the change in potential energy of the particle earth system is earth, eta kon earth mane ground ta ko ame koche earth system. So change in potential energy with respect to the particle and earth system माने अर्थ रे थिला बेले तार कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एनर्जी केते थिला, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. एवं गोटे हाइट गोटे सर्टेन हाइट को गला परे तार पोटेंशियल एनर्जी केते चेंजेस है जदी हमें वी नीड टू फाइंड आउट सपोज. ओके, सो हाउ वी कैन फाइंड आउट. सो डेल्टा u इज इक्वल टू हमें कोन mgh बोली हमें जानि छै ना, हमें 10th क्लास रे u माने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी is equal to mgh, where the m is the mass of the particle, g is the gravitational constant and h is the height of projection. Okay, similarly hame iti jodi hame tikke taku advanced way re naba, so delta u is equal to mg y final minus y is your height. So mg delta y, what is y final minus y initial, that is delta y, mane the change in position of the particle in y direction. And if the reference point of the particle is yi equal to 0, माने y initial earth रे जदी earth रो जदी हमें कंसीडर करिबा त माने initial point ता कोन 0 रे अछि, ground रे अछि. So in that case what you can write, and the corresponding gravitational potential energy of the system is set as ui equal to 0, माने u final minus u initial जदी हमें नौचे. So potential energy ता गोटे अर्थ रे जेतले गोटे बॉडी अछि, सो हमें सेटा को 0 नै परिबा, x is equal to 0 कंडीशन रे हमें 0 नै परिबा. सो व्हाट इज द माने जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. सो uy is equal to mgh किबा mgy. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द इक्वेशंस और सम ऑफ द बेसिक्स. अच्छा, आज के नुआ अच्छा प्रथम क्लास कार अछि की एनीवन हु इज डूइंग फर्स्ट क्लास टुडे? श्रीमन विश्वजीत जानी, विश्वजीत जानी, हेलो आज्ञा बुझुछ? आज्ञा सर पूरा फुल सेमिति सेमिति केते परसेंट? 60 to 70. वेरी गुड, एक्सीलेंट. 60 to 70 माने तमे से जो कोन से आफ्ताब केउडे जे हेनी नीट टपर ना कोन
माने पूरा से बोधे गिली देइथिला पाठटा so anyway so mgy okay so this is the potential energy configuration see this example okay so गोटे टमाटो मनकर मु गोटे वर्टिकल ग्राउंड रो जदी पकेबी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन रे ओके कोन होउची सो एई जो जेतेले टमाटोटा ऊपर को जाउची so negative work done by the gravitational force negative work done by the gravitational force हमें काहे कहूचे because आमे जो फोर्स ता देइचे अप्लाइड फोर्स सेटा कोन ऊपर आड़ डायरेक्शन रे देइचे बट ग्रेविटेशनल फोर्स ता ए बॉडी रो ए जो टमाटो जेतेले ऊपर को जाउची वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन रे जेतेले जाउची सेते बेले ताकू कोन करूची ग्रेविटेशनल फोर्स तळ को टाणिया पई चेष्टा करूची so that is why the speed of this tomato decreases when the body is moving upwards okay so speed decreases so that is why we can say the work done by the gravitational force is negative work done in this case in particular this configuration so similarly जेतेबेले एई हाइट को पहुंची जाउची सेठी कोन वेलोसिटी टा कोन ही जाउची जीरो ही जाउची गोटे पर्टिकुलर इंस्टेंट रे जदी हम देखिबा गोटे बॉल को हम थ्रो करले सो गोटे पर्टिकुलर इंस्टेंट रे गोटे हाइट को जाई कि सेई हाइट रु तळ को आसिया पे वापस आसिया पे जेतेबेले स्टार्ट होउची okay so in that case you can say the velocity at that point is zero so v initial सेठी हम जीरो पके देबा कि v फाइनल जीरो पके देबा तमे पुणी तळ को आसिला तळ को आसीबा आरंभ होला so in that case जेतेबेले तळ को आसीबा आरंभ होउची so what the gravitational force कोन कहउची force of gravity is bringing it downwards again so gravitational force or direction जो पटे ओके माने ग्रेविटेशनल वर्क डन रो डायरेक्शन जो पटे एवं ये रो कार बॉडी रो मूवमेंट मध्ये सेही पटे माने डिस्प्लेसमेंट मध्ये सेही पटे तो सेही जगह रे हम कहबा द पॉजिटिव वर्क डन इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ओके सो एठी हम कोन करबा as it rises the gravitational force does negative work on it decreasing its kinetic energy कोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन रे गला बेले velocity decreases the kinetic energy मध्ये decrease होउची so कोन होउची actually kinetic energy potential energy रे convert हो जाउची at this point जदी हम इट कैलकुलेट करियो what is the potential energy mgh we can write okay ता अर्थ कोन kinetic energy decrease होउची बट कन्वर्ट हो जाउची को एनर्जी को potential energy को कन्वर्ट हो जाउची energy can neither be created nor be destroyed but it can be transformed from one form to another form हला सेमती आमे जदी kinetic energy vertical movement रे decrease होची that means it is converting to some other form of energy so what is that form of energy that is nothing but the potential energy remains constant body energy will definitely remains constant at any frame of reference or any point of reference you can measure it okay so definitely there is a conversion between kinetic energy and potential energy एठी जेतेले थिला एई पॉइंट रे जेतेले थिला बॉडी टा हम कोन नेले एठी कोन नेले एठी हम नेले सॉरी एठी हम नेले कोन जो एठी ui is equal to 0 माने ग्राउंड रे जेतेले थिला पोटेंशियल एनर्जी टा 0 ओटे स्टेट ऑफ रेस्ट रे अछि किंतु ऊपर को गला माने कोन काइनेटिक एनर्जी बढ़िला सॉरी कमिला पोटेंशियल एनर्जी बढ़िला सो नेट एनर्जी टा कांस्टेंट रहइबा दरकार ओके सो सेमती तमे तापरे देखिबा कोन तापरे तळ को आसला बेले कोन हैला डिक्रीजिंग इट्स काइनेटिक व्हेनेवर द टोमेटो डिसेंड्स माने तळ को आसीबा आरंभ होला ओके नीचे आना शुरू हुआ तो ग्रेविटेशनल फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन इट increasing its kinetic energy that means when the kinetic energy is increasing so definitely you must consider the potential energy of the body is decreasing okay so these are the basics of physics okay basics of laws of motion or the basic kinematics or the basic mechanics you have to consider all such things similarly what is elastic potential energy जेमति हमें देखुतले एठी काइनेटिक एनर्जी सॉल्व कला बेले जेमति हम देखुतले एठी जे गोटे स्प्रिंग कांस्टेंट अछि एवं ता जो वर्क डन होउची सो दैट वर्क डन मे बी पॉजिटिव वर्क डन नेगेटिव वर्क डन इसु हमें कंसीडर करथले स्प्रिंग केस रे ओके जेमति काइनेटिक एनर्जी रो कोन
तार ये हला कोन चेंजेस हला हमें जेमति कंसीडर करले दैट इज minus half kx square. That means the force or the spring force, what work it is doing on the body, so that is called spring force. Similarly हमें एठी देखिबा जदी हमें एठी कोन देखिबा एठी हां what done sorry हाँ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किंबा the change in potential energy when the body is at state of compression or extension. गोटे spring लागि छि गोटे body रे गोटे spring attached है छि, suppose there is a compression or there is a extension of an elastic object. Okay, हम एटा को compress कर दे परिबा किंबा एटा को elongate कर दे परिबा suppose. So what is the elastic potential energy associated with this compression or extension? So for a spring that exerts a force F equal to minus kx. Okay. So जदि गोटे force exert होउची तो से केस रे हम कोन कहबा spring force रो हम जानि छे define करछे F is equal to minus kx. So when its free end has displacement x, okay, the elastic potential energy can be defined by this formula, that is half kx square. Okay. जेमति हमें काइनेटिक एनर्जी जेमति तमे डिफाइन करथलो सेमति पोटेंशियल एनर्जी इति डिफाइन करियो ux is equal to half kx square. सेमति रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैज द स्प्रिंग एट इट्स रिलैक्स्ड लेंथ एट व्हिच x is equal to 0 u equal to 0 हमें कंसीडर कर करियो. ओके माने जेतेबेले x is equal to 0 गोटे रिलैक्स स्टेट रे अछि, सपोज देयर इज नो कंप्रेशन और देयर इज नो रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी एंड द स्प्रिंग इज अटैच्ड एंड लेट दिस पॉइंट बी द ओरिजिन. तो सेतेबेले हमें potential energy at x is equal to 0 को हमें u equal to 0 माने potential energy is 0 at that x is equal to 0 point we can consider. Okay, so the net work done by a conservative force on a particle moving around any closed path is 0. Okay, so what is the net work done by a conservative force on a particle? जदि गोटे conservative force particle around a closed path करूची, so what is the work done? Work done is 0. So that means delta u is equal to 0. माने the change in potential energy is 0. Okay. So ये सब जिनस हमें एवडा सब माने interrelated formulas. So you just write these equations. एटा जेंति मु कहली ना एटा जेंति the gravitational force is conservative माने कोन suppose a point ru a point को आसुची गोटे downward direction रे गोटे particle आसुची following this path. A point ru a point आसिला एठी गला पुनी एठी बाउंस हेकरी पुनी एठी आसिला सपोज एंड a point ru a point by this path जदी आसिला हां a point ru एठी की एठी की जदी आसिला तो सेठी कोन करियो. सो दी जन को केस रे हमें जदी कैलकुलेट करिवा हमें जदी प्रूव करिवा आई कैन गिव n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट डोंट ट्राई टू माने कोन टाइम वेस्ट करियार किछि नै एटा जस्ट गोटे नॉर्मल माने मने रखिया जिंस. ओके सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, so it does not depend upon the path. Any choice of path will give you the same amount of work. माने एठु एति के आसिया पे जदी 50 जूल लागुची सो एठु एति के आसिया में पाई मध्ये 50 जूल लागियो, किछि सेमति डिफरेंस आसीबो. ओके एटा होची गोटे बेसिक कांसेप्ट. सेमति कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जदी देखिबा. ओके व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी एट देखो ए जो एठी कोन छुआ माने सब गोटे हरिचंदी गोटे कपड़ा करचंदी पिलाटा को गोटे हाइट रे फोपाडली. सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग हियर. सो एठी थिला बेले एठी कोन काइनेटिक एनर्जी ऊपर गला काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हला एई जगह रे गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे पोटेंशियल एनर्जी माने काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द होल काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी. तापर एई पॉइंट रो पुनी एठी कोन हला ए छुआटी पुनी तळको खसिबो हला. सो एठी कोन होची पोटेंशियल एनर्जी इज अगेन कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. तो एई केस रे तुम कोन करिवो देयर इज अ चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी अर्थ कोन एठी तुम लिखि परिवो जे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तार टोटल ताको हम कहबो मैकेनिकल एनर्जी. सो व्हाट इज डेल्टा k is equal to w हम जानि छे ऑलरेडी. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज द नेट वर्क डन. अच्छा सेमति पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन पढेला बेले मध्ये हम कहली कोन. सो डेल्टा u is equal to w. So delta u is equal to w माने कोन minus w. So माने कोन एटा change in potential energy. Okay we have read it.
these two equations. So combining these two equations, what we are going to get? So delta K is equal to what? Minus W minus delta U. It a work done. So it is just I mean combine kariba theta equations to you will find out this equation number 3. So let it be 2 and let this equation be 1. Okay. So what is delta K? K2 minus K1 K final minus K initial is equal to minus already there. So again U2 minus U1. So what you are going to get here? So K2 plus U2, mane eta jodi ame epot side ko aniba. So minus U2 will be positive. So K2 plus U2 is equal to K1 plus U1. So that is called conservation of mechanical energy. So whenever a conservative force is acting on a particle, conservative force mane kono? Type of spring force, gravitational force. Whenever some conservative force is acting on a particle, so there is conservation of mechanical energy. Mechanical energy means what? The change in kinetic energy plus potential, or the total kinetic energy plus potential energy in a configuration of a system. Okay, so that is called as kinetic energy. Mechanical energy. Okay, so mane ta artha kono, in an isolated system where only conservative forces and acts on a particle cause changes, energy changes. Okay, acts on a particle, ta mane kono, energy is changing, or kinetic energy is changing, or potential energy is changing. Okay, so in that case you can write the kinetic energy and potential energy can change because force is acting on the particle. So that means definitely there is a kinetic energy and potential energy change, but their sum, that means what? The sum of the kinetic energy plus potential energy, that is the total mechanical energy, that is E mechanical of the system cannot change. Okay, so mechanical energy of the system cannot change whenever a conservative force is acting on an isolated system. You can consider this formula. Okay, so it out a basic concept ida bi madhya mane rakho. I'll send the PDF today. Okay, so no need to worry about that, but just try to understand the basics and we'll solve some problems also, so in the coming classes. Semti ame aji dekhiba what is center of mass. What is center of mass? We can consider center of mass mane kon. Suppose center of mass padhya purbaru, suppose I am throwing a ball, I am throwing a spherical shaped ball, suppose in a vertically upward direction, and it is coming to this final point, initial point ru final point ko asila. Okay, gote ball ko ame consider ta artha we can consider as if the whole mass of the body is concentrated at the center of the particle. Ame ball taku jetole free body diagram karuche, whenever we are drawing a free body diagram, so what we are considering? We are considering this whole massive size ball. Suppose there is a ball of this size, but this ball is again thrown in vertically upward direction and this ball comes to this position. Okay, so what we are considering? We are considering the ball as a small point particle, as if the whole mass of the body, माने whole mass, तार जेत्ते की mass अछि ता भितरे जेत्ते atom molecule जहाँ सब अछंती, as if गोटे center रे से कोन हिची माने distribute हे जाइछि, से ball रो mass ता distributed at the center of the particle. ओके, सेटा को हमें कहछे सेंटर ऑफ मास हैला, माने एई गोटे पार्टिकल ता गोटे छोटो सेंटर ता कोन हला एई पटे गला एवं माने कर टोटल बॉल रो वेट होची 50 केजी, लेट इट बी. सो ई टोटल 50 केजी बॉल ता आज इफ माने गोटे पॉइंट रे कंसंट्रेटेड हे जाइछि एंड दिस पॉइंट रो वेट होची गोटे 50 केजी, लेट इट बी हैला. से 50 केजी बॉल ता ऊपर गला पुनी तळको आसी. सो दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. But just imagine physics ame kon pai padhuche, why we are learning physics? In order to make our life easy, we are just learning physics and we are learning different types of concepts. Suppose mu gote bat ko let me throw a bat in this direction. So bat ta kon heithibo, so let us consider like this. Okay, and so this figure is not so
easy. Okay, so let us consider this bat. Okay, आमे जदि गोटे bat को फोपाडिया थ्रो करबा ऊपर को, so what this bat माने तार मूवमेंट ता केमती एटा केतळे आसी कि एमती डायरेक्शन रे थिबो, ए हैंडल ता केतळे ए पट डायरेक्शन से थिबो. सपोज let this be the handle and this be the that base तार जो लोअर पोर्शन. तो देखो माने ए हैंडल ता ए पटे बुलुची एवं ए जो बेस ता तार ए पटे बुलुची, सेवन ताका भीतर पुनी गोटे रोटेशन मध्ये हबो, रोटेशनल मोशन एपटे सर्कुलर मोशन. ओके, so different kinds of motion are possible, but can you माने just imagine आमी जतले गोटे बैट को मध्ये थ्रो करछे, even if the handle is in moving in opposite direction or in different direction to the direction of this base or the direction of this ground. Okay, so even if the body is moving in different type of orientations, okay, last रे गोटे बैट एमती हे आसी कि लास्ट रे एठी ही पहुंची. At the end this bat will definitely come to the ground. Okay, and it will be in ground state. So definitely something is there inside this bat, so which is moving in a parabolic path or kimba upur ku gala tolu ku asila. Okay, so something is moving. So what is that thing that is moving? So that means a bat jo ame gote different shape ro bat te nele, sorry आमे गोटे डिफरेंट शेप रो बॉटल नेले किंबा बैट नेले. ओके, सो लेट अस कंसीडर लाइक दिस. ओके, सो ए बॉडी रो जत्ते मास अछि, लेट इट बी 50 kg इज द मास ऑफ द दिस बैट और दिस बॉटल. ओके, सो ए 50 kg रो गोटे सेंटर गोटे पॉइंट एमिति थिबो, सपोज लेट इट बी दिस पॉइंट. सो एनी पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन द सिमेट्री, depending upon the symmetry of the object, the center of mass may vary. So गोटे एमिति पॉइंट हमर थिबो जो पॉइंट ता एक्चुअली देखो जेमति हमें बॉल केस रे कंसीडर करथिले, we can consider in case of that center of mass actually moving in a parabolic path or a path and it is coming to the ground state. So that is why even if this point is moving in a different direction, this point is moving in a different direction, but as a whole this bat is moving in this path. So that path, that concept is called as center of mass. तामने प्रत्येक बॉडी रे गोटे एमिति मास थिबो, गोटे एमिति सेंटर ऑफ पॉइंट थिबो. ओके, जेमति कि तार मास ता डिस्ट्रीब्यूट हेची से सेंटर रे, सेही भलिया गोटे ओरिएंटेशन माने सेही भलिया गोटे कॉन्फ़िगरेशन थिबो. सो दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. श्वेता जी बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Any problem? No, sir. Very good. Krishna, Dilip, hello. Yes, sir. बुझियोची? हाँ, sir. अनुसया को पद्मभद्रा. Sir, बुझियोची. Very good. Excellent. So Varsha? Yes, sir. বুঝিयोची? हाँ, sir. বুঝতে পারছিস তো? हाँ, sir. Okay. ভালো ভালো. So এইটা হচ্ছে, this concept is called center of mass actually. So whenever I don't know you people have ever played seesaw or not. आगुर कोन गोटे एमती इटा थुआ होतला, एठी गोटे एमती गोटे बसिबा पई एठी गोटे सिटिंग अरेंजमेंट थिबो, एठी मध्ये गोटे बसिबा पई सिटिंग अरेंजमेंट थिबो. Nowadays no one play such type of games. Okay, you people are engaged in your mobile. So but we have played this kind of games. Okay, so एठी कोन एठी गोटे मनीषा बसिबो, एठी मध्ये गोटे वेट मनीषा बसिबो. So whenever these two these two weights m1 m2 gets balanced, okay, ता अर्थ कोन, suppose let this be the distance x and let this be the distance x. Okay, माने पूरा equal distance रे थिबो एवं this mass and this mass जदि same थिबो. Okay, so this point you can say this is the center of mass of this whole system. This whole एटा को गोटे हमें सिस्टम नै लिया.
This is a physical system. This whole arrangement of persons or arrangement of weight or whatever seesaw, this whole body can be considered as a one system or one system configuration. ताको कुआ जाए हैला. So m1 माने दी जनकर mass समान थिबो and both are in equal distance, so definitely this will not move, this seesaw will not move, they will be parallel, पूरा straight समान ही रहो. But whenever this m1 एक ज्यादा मोटी सी लड़की अगर बैठ जाएगी और यहाँ पे एक पतली सी लड़की बैठेगी, तो ये मोटी वाली क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी. ठीक है, मोटी वाली नीचे आ जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी. पर इसको नीचे खींचने के लिए ये क्या करेगी, ये जो मोटी वाली लड़की क्या करेगी, एक उसके पैर में क्या करेगी, एक नेगेटिव माने गोटे रिएक्शन फोर्स तक लगेगा पड़िबो, सो दैट अगेन this this seesaw will move upwards and this पतली वाली लड़की या हल्की वाली लड़की ये नीचे आ जाएगी. Okay, so these are the concepts of seesaw. So just since we are learning physics, so we can quantitatively calculate such type of arrangements. So in order to get the center of mass, so what are the arrangements, let us see. So there is a mass m1 and there is a mass m2. So let this point be the origin and this point let be the COM. माने कौन? COM माने center of mass. Let this be the center of mass of this whole arrangement. This is a total arrangement. Okay, so this is a total arrangement. This is a छोटो mass. देखो ये हल्का वाला लड़की है और ये let us consider this is a मोटी वाली लड़की. Okay, भारती सिंह, जो कॉमेडियन भारती सिंह, कपिल नाइट्स विथ जो आता है ना, तो ये let us consider this is Bharti Singh and let this be considered Deepika Padukone. Okay, so Deepika Padukone, if she will sit here and Bharti will sit here, definitely the center of mass is tilted. Center of mass ta देखो मझिरे नहीं towards the Bharti Singh अछि. Okay, so in that case we can say the center of mass is displaced towards the higher mass. Okay, bigger mass. तो आमे एटा को कंसीडर करबा द m1 m2 भितरे जो डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस बी d एंड सेंटर ऑफ मास थारु ए जो हल्का वाला मास का जो डिस्टेंस है, लेट दैट डिस्टेंस इज x. ओके, किबा एटा को तमे नहीं परिबो x1, एटा को तमे नहीं परिबो x2, एमते नहीं परिबो. डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस आर पॉसिबल, बट एई टाइप रो कॉन्फ़िगरेशन जदी हमको देइछि, ओके, एटा जदी x हैला, एटा कोन हिजो d - x. ए सेंटर ऑफ मास रो बड़ा मास रो डिस्टेंस है d - x, and d is the total distance between two masses. So center of mass टाको हमें केमति लिखि परिबा, देखो, that means x, this x distance can be written like this: x is equal to m2 माने बड़ा मास m2 divided by m1 plus m2 into the distance between two masses, that is d. X is equal to m2 divided by m1 plus m2 into d. Similarly, when there are two masses but this is not in a origin, suppose एटा मध्य डिस्प्लेस हेकरी अछि, एटा मध्य गोटे पॉइंट को डिस्प्लेस हेकरी अछि and एम्ति किछि गोटे कॉन्फ़िगरेशंस देछि. Suppose this is the origin and center of mass और origin भितर distance is x COM, that is x center of mass. एटी जेंति एटी origin रे हमर मास ता अछि, सेति में हमें x COM एटी नै करे. बट एटी देखो एटी ओरिजिन नाही, एटी डिफरेंट गोटे पॉइंट रे अछि. सो हमें जदी एटा को हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस नबा, सो एटा को जदी ओरिजिन नबा, सो लेट x be the distance, center of mass and origin, and x1 is the distance from origin and m1, and x2 is the distance from origin and m2, and d as usual, the d is the distance between two masses m1 and m2. सेथरे हमें कोन फार्मूला यूज कर परिबा, तळे देखो मु फार्मूला लिखिछि: shifting the axis does not change the relative position of the center of the mass. हमें एक्सिस टा को शिफ्ट कर देले माने कोन, हमें m1 एवं m2 रो पोजीशन टा को टिके शिफ्ट कर देले, राइट साइड नहीं आसीले, बट सेंटर ऑफ मास टा देखो जेमती राइट आडू को ढुके गिरथिला, सेमती राइट आडू को मध्य बिगर मास आडू को ढुके गिर अछि सेंटर ऑफ मास.
तो व्हाट विल बी द फार्मूला टिके चेंज हे जिवो काहे कि शिफ्टिंग टाइम में जेतु की कंसीडर करछे सेठी m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2 हमें कंसीडर करते m1 x1 माने origin to m1 ର distance ଟା केते that is m1 x1 plus m2 x2 okay divided by the total mass that is m1 plus m2 ए जो m1 plus m2 this can be written as capital M that is total mass you can say total mass so this you can write m1 x1 plus m2 x2 divided by total mass that is capital M okay so these are some of the basics of center of mass energy work power मु कहि छि एथरक जो तमर वीकली टेस्ट हबो तमर प्रोजेक्टाइल मोशन सर्कुलर मोशन ए सब ऊपर क्वेश्चंस पकेबे नेक्स्ट वीक रे तमर लॉज ऑफ मोशन वर्क पावर एनर्जी ए सब ऊपर मध्ये क्वेश्चंस पकेबे so by that time we will try to solve some problems I will solve some problems in your class in your regular classes and I am trying my best to resume that that means to start that YouTube live session where you can solve a number of problems additional problems जोटा कि एठी possible नुह YouTube live रे हमें पढ़िबो okay so just wait I'll take your attendance all of you just wait for 1 minute और किसका क्या अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बोलो कोई समझ में नहीं आया किसी को ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है सपोज श्रीमन विश्वजीत जानी श्वेता अरे हे इटा कौन एंदी कला कला आसला ओ टिके रो समझते जस्ट वेट क्लास ऑन हो गया है फालतू चीज फ्लैश ऑफ आज मैं एक बढ़िया वीडियो डाला हूँ YouTube पे देख लेना सब लोग 1 मिनट का वीडियो है मतलब इसे जनरल नॉलेज वाला डिफेंस रिलेटेड एक्चुअली मेरा एक छोटा भाई है वही सब ये सब करता है जो थोड़ा एडिटिंग वगैरह ये सब और बाकी तो पढ़ाने वाला जो चीज है वो मैं ही करता हूँ ओके सो थैंक यू फॉर टुडेज सेशन ऑल ऑफ यू I am trying my best for that YouTube session okay YouTube session जदि हबो ताले मु तम मानकु समस्त को जणेबी हमें जो प्रॉब्लम्स तम माने केही देखिनो किबा आगुरु सॉल्व हेइनी